actually, but they were kind in a very, very good way to us. I'm Gitanjali Soni with my experts and my dear, dear friend Adesh Swadesh. Just introduce our experts and then जी we हाँ shall. बिल्कुल हमारे दो एक्सपर्ट हैं पूर्व क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कन्नन। स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन। वेंकट और कन्नन ये हमारे ऑल इंडिया रेडियो की एक्सपर्ट की ओपनिंग जोड़ी लगातार 3 प्रोग्राम में हमारे साथ और इस पूरे मैच पर इनकी पैनी नज़र थी। ड्रेसिंग रूम में इनकी कमेंट्री जारी रही। कन्नन बहुत एक्साइटेड थे आप, आखिरकार जिताकर ही दम लिया। देखिए डकलर लुइस में 5 रन से जीतना जी। पहले ऐसे लग रहा था कि बारिश ना हो, बाद में ऐसे लग रहा था कि बारिश हो, उसके बाद चमत्कार हो, और जो बॉलिंग हुई, जो कैचिंग हुई, बिजली कड़कती हुई। जी हाँ बिल्कुल। और वेंकट देखिए ये गेम ऐसे ही है कि ये T20 गेम, बिकॉज ये टीम्स थोड़े इवनली मैच्ड हैं और ऐसे ही फिनिश होगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वन साइडेड मैच हो, वो नहीं होगा, क्योंकि बोथ द टीम्स आर प्लेइंग एट देयर पीक। अब नाउ देयर यूज्ड टू द कंडीशंस, बारिश, ठंड, जो भी है, बाउंस ऑफ द विकेट, ये सब काफी मैचेस हो गए वहाँ, जी। 1 महीने से चल रहा है। हाँ। तो आप देखिए कितना मजे से खेल रहे हैं लोग, और विकेट कंडीशंस अच्छे हैं। दिस इज अ गुड पिच, प्रॉब्ली द बेस्ट पिच वी हैव हैड फॉर दिस टूर्नामेंट। Right. So you saw some good cricket. And especially for Virat, this is the best pitch. Both the Yeah? teams played well. Not only Virat, even they played well. Luton Das played brilliantly. Yeah, he did. If the rain interruption was not there, the match might have gone some other I direction. was absolutely tensed when Luton was not getting out. I was just thinking, oh God, let's just pray something happens. But right now, I think our callers would be praying for some interaction with our experts. So आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421084 23421085 011 लगाएं, कोड है हमारा, और दिल्ली के बाहर से भी 011 ज़रूर लगाएं। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आप बहुत ही खुश होंगे। और अगर आप हमें देखना और सुनना दोनों चाहते हैं तो आप प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पे जाके हमें दोनों ही तरीके से देख सकते हैं और जी सुन हाँ, सकते हैं। स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल जी। प्रसार भारती। और कन्नन, यहाँ जिस तरह से अर्शदीप सिंह आखिर में जिस तरह से कुछ जान बचाते हुए भी नज़र आए और बैट्समैन को फंसाते हुए भी नज़र आए, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए जो एक डेथ ओवर की ज़रूरत थी बॉलर की, वो हमें मिल चुका है। अर्शदीप को गालियाँ पड़ी उनको एशिया कप में, बट जितना उन्होंने आपको इनोवेट किया है, 9 विकेट लिया अब तक। और आई वुड फर्स्ट लाइक टू अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय अश्विन आफ्टर द रेन ब्रेक, जो बॉलिंग उन्होंने करी, एंड देन हार्दिक पांड्या। हाँ, बट अर्शदीप सिंह इतना कम समय में उन्होंने जो प्रोग्रेस किया है, और वो जो सूर्य कुमार यादव के हाथों में गेंद चांद की तरह थमी। सूर्य कुमार यादव एंड सब्स्टिट्यूट हुडा का कैच, मैं समझता हूँ ये डिफाइनिंग मोमेंट था। जी। बट दिनेश कार्तिक 2 कैच छोड़ा था उन्होंने। जी, ये एक्चुअली हम वही बात मैं करना चाह रही थी कि हमको पहले भी लग रहा था कि हमारी फील्डिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा हो जाए तो पुराने पाप हम धो देते हैं कि चलिए जो जिसका खात्मा अच्छे तरीके से हुआ है उसको ज़्यादा हम पिन ना करें चीज़ों को। बिल्कुल। 11:15 बजे रात को, हाँ 10 डिग्री टेम्परेचर, हाँ। बॉल पकड़ना आसान नहीं है और बॉलरों को ग्रिप करना भी आसान नहीं है क्योंकि वेट था ग्राउंड। लेकिन सर ट्रेनिंग तो इसी चीज़ की है ना, दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती ट्रेनिंग है, ड्यू की होती है, हाँ जी। बारिश के बाद ये नमी तो का नहीं वेंकट सर होता। बताएंगे, उन्होंने हर कंडीशन में खेला है। ऐसा है, प्लेयर्स आर नाउ प्रोग्राम्ड टू प्रैक्टिस these type of conditions. Right. So that is nothing new for them. These are expected. You're expected to, sometimes in a tournament of this length, in this type of weather condition, you're expected to have conditions like And the this. best part is the presentation ceremony, and let's just expect Virat to say something really great. Well, first of all, thank you. Pretty close game. Not as close as, not as close as we would have liked it to be, but yeah, it was. Yeah, another good day with the bat, I guess. I was just trying to play myself into the innings. When I went in, there was a bit of pressure. So the mindset today was different. Even in the last game, I felt like I was striking it really well till the time I got out. So I was watching the ball well, and then I just thought, I don't want to let a few mistakes curb my instinct. So when I went in, I kind of wanted to hit a few boundaries, and that intent was there to see. That's what gets me going, my body language. To answer your question, I'm just in a happy place. I don't want to compare anything. What's in the past is in the past. At this present moment, I'm happy to contribute for the team. Back at number 3, you're now sort of not going hard early on. You're backing yourself. Batting in T20 has been a bit different in these conditions, hasn't it? As soon as I knew the World Cup is in Australia, I was grinning from ear to ear because I knew here you need good cricketing shots. The kind of shots we play in the subcontinent or
even in the Asia Cup, it is not gonna hold us in good stead. I played a lot of cricket here, so I knew good cricketing shots would be the key. And I've always backed myself to kind of hit through the line of the ball. It's just an extension for me in any format, and I knew that kind of experience and that kind of game awareness, having played in Australia before, it'll come in handy for the team. What is it about Adelaide? What is it about Adelaide? You and Adelaide are an enduring story. Well, I absolutely love playing in this ground. I don't know what it is. Even right from the nets at the back, as soon as I enter this stadium, it just makes me feel at home. I mean, I've said this once. That knock at MCG was meant to be. When I come to Adelaide, it's like I'm meant to come here and enjoy my batting. And this ground and this wicket has been very kind to me. It wasn't just you. A lot of us are waiting for you to keep batting like this. Well done. Thank you very much. Thank you. Cheers. Yes, we do. Thank you very much. Player of the match, Virat Kohli. We would like to see you grin from year to year always. And with this, grinning are the callers. हमारे पास callers जुड़ गए आदेश. जी हाँ, जुड़ते हैं उनसे. पहले लिसनर से बात करिए गीतांजलि जी. Hello. एक वेंकट के समक्ष में दूसरे वेंकट आ गए. Venkat ji, good evening. We were waiting for you indeed. थैंक यू. इंडिया जीत गई. इंडियन टीम को मेरे मुबारक. और उसके बाद मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जी. आने वाले मैचों में रविचंद्रन अश्विन से न्यू बॉल बॉलिंग कराना है जी. एक समय था रविचंद्रन अश्विन न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, लेकिन आजकल इनको मिडिल में ला रहा है जी. ये कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं. वेंकट क्या कहते हैं? जी जरूर बात करेंगे. एक और लिसनर को सुन लेते हैं. हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपना नाम बताइए. नमस्कार जी. मैम को भी नमस्कार जी. नमस्कार जी. सर, एक तो भारतीय टीम को जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई जी. और विराट कोहली साहब को भी 1000 कुछ रन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी. और मैं यामीन भाई रेडियो वाला चिरोड़ी लोनी जिला गाजियाबाद जी. तो आपकी बधाई स्वीकार करते हैं, तमाम देशवासियों को बधाई देते हैं और ऐसे ही आप देखते और सुनते रहिए हमें. Now Venkat, one question was directed to you, so would you like to take that? Yeah, it is a good question, but I know it's in my mind also that sometimes you can start with spinners, but you see this is being played in late autumn. So it's almost wintry conditions, 11 degrees, 13 degrees, and therefore when you got the field restrictions in the first 6 overs, if you start with spinners, it's a bit of a gamble. The pitch is not turning out. There's no help for the spinners at all. So if you got good aggressive batsmen, they'll go for it. And with the field restrictions, you'll have problems in trying to restrict the batsmen. And because you've seen that the fast bowlers have taken maximum wickets in this tournament so far. Roughly 70% of the victims have been to fast bowling and express fast bowling. So therefore, to start with a spinner, it's rare. It's not that it cannot be done, but since there is no assistance for them on these wickets, it being early season in Australia, you have to go with your ace fast bowlers because they get a bit of swing and bounce. और कनन, हमने एक गाड़ी देखी जो एशिया कप से पहले 2 साल तक गैरेज में खड़ी थी. पुरानी विंटेज थी और उसके बाद जैसे ही नया रंग रोगन हुआ, क्या चमक रही है. विराट कोहली, पुराना विंटेज विराट कोहली नजर आ रहा है आपको? देखिए, रबिंग कंपाउंड, पॉलिश सब कुछ लग चुका है. डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है और आपको नया दिख रहा है. ये फरारी की तरह दौड़ रहे हैं जी. एशिया कप में जो अफगानिस्तान के विरुद्ध उन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद आप देखिए कि आप बैटिंग कर रहे हैं 3 अर्धशतक इस वर्ल्ड कप में. कनन, आप बोल रहे थे ना, सो आई वाज कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड. और मैंने आई थिंक वेंकट सर से ड्यूरिंग व्हेन वी वर सिटिंग एट बैक साइड, सो आई वाज सेइंग दैट इफ अ प्लेयर स्टार्ट्स प्लेइंग लाइक केएल राहुल, ही हैड परफॉर्म टुडे, सो इट्स लाइक गिवन थिंग कि फॉर्म में वापस आ गए. इट्स जस्ट वन गुड नॉक. सो व्हेन वी टॉक अबाउट विराट, like surely this World Cup he has done pretty well, but I'm keeping my fingers crossed because it's just about one match. Don't compare Virat and Rahul, please. It is cheese and chalk. No, it's not comparison. It's just वेंकट जी, analysis. राहुल का फॉर्म में आना या रन बनाना, ये भी एक अच्छा संकेत है. बिल्कुल. You see, even if you now notice, the top 4 players have all got 50 plus in at least one inning. Rohit also has got a 50.
Surya has got runs. Kohli is he's not got out except against South Africa. He got out early. Otherwise, in this whole tournament, he's remained not out. Not जिस तरह से 4 छक्के लगाए केएल राहुल ने. So Look at his average and highest ever in the World Cup. Rahul batted very well today, brilliant batting, and he looked in good form. He was middling the ball. So, on these wickets, you need to, as I said, first few overs, you got to settle in. And once you settle in, these wickets are good. The ball comes onto the bat. Unlike, say, in the subcontinent, where it will be sometimes slow, sometimes it will keep low. Here it comes at a good height and even height. If you bounce it, it will bounce. With India, if you play, or in subcontinent, if you bounce it, sometimes it won't bounce. It will only come, say, waist high or at best little higher than that. So whereas here, if you notice, like we saw in Perth, and even here we saw some of the short balls went over the batsman's head. So I think these are true conditions for batting. And as Virat himself said, that once you are settled, you can play your shots. You can play those shots on the rise. You can hit it, over the top. All these shots which you don't normally play in subcontinent, you can play on those wickets. जी हाँ. Exactly, and the major playing factor in the studio. Callers, once again, hello. हेलो जी नमस्कार, गुड इवनिंग. जी, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ. जी हाँ जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे. कहना चाहेंगे भारत की शुरुआत इतनी धीमी क्यों होती है? आपकी कमेंट्री बड़ी अच्छी लगी सुन के. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया. इसका जवाब देंगे थोड़ी देर में. एक और कॉलर है हमारे वैसे साथ. तो आज भारत की शुरुआत इतनी धीमी नहीं थी. जी, लिसनर से बात करते हैं. हेलो 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 जी, प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है. बताइए अपना नाम. जी नमस्कार सर, मैं पूनम चंद बोल रहा हूँ भलोदी ब्लाइंड स्कूल से सर. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी नमस्कार कहिए. आप जो कमेंट्री सुनवा रहे हैं आजकल, वो बहुत अच्छी लग रही है हमें, और टाइम टू टाइम मिल रहा है. और भारत जीता आज, इसके लिए बहुत बहुत बधाई. जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए. कदर, ये हमारे ऐसे लिस्टर हैं जो ब्लाइंड भी हैं लेकिन रेडियो के बहुत अच्छे श्रोता हैं. तो आपको लगा कि पूरा पैसा वसूल मैच रहा, और चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में साकिब अल हसन क्या कह रहे हैं. Story when we play against India, we are almost there, but we never finished the line. But yeah, as you said, it was a very good game of cricket. I think the crowd enjoyed it, both team enjoyed it. That's what we want. In the end, someone has to win and someone has to lose. Now, I don't know if it's because of the team composition, but you send Liton Das up to open the batting. Say he's in good form. Yes, he's batting really well. He's probably our best batsman at this moment going around. The way he batted in first 6 overs, that gave us a lot of momentum, and we started believe that we can chase this total with small boundaries on the side, and ball was coming onto the bat nicely. That was an interesting call. You won the toss, chose to field. Your fastest bowler was bowling really well, and you finished him off early. Tell us about the thought process behind that. Yeah, I mean, if you look at India's top 4, they're very dangerous. So our plan was to get those 4 wickets, and that's why we bowled Taskin. I think he was our main bowler. He was picking up wickets regularly. Unfortunately, he couldn't pick up wickets, but he was very economical. The way he bowled today also, went past the bat quite a lot of times. I thought he was unlucky. So that was the plan, to get India's top order out as less as possible, so that we can dictate the game. Well played today as the senior most player going around. What are going to be your words to the team after such a defeat? Not much. We've been very relaxed inside the dressing room. We've not been talking too much about cricket. We wanted to enjoy this World Cup, and that's what we are doing. We played a very good game of cricket, this one, and we have one more matches, and hopefully we can continue this. Look forward to it. We had a fantastic game today. Thanks, Shakib. Thank you very much. Right, there you are, captain of Bangladesh, Shakib Al Hasan. It's time now for me to welcome the winning captain, Rohit Sharma. You normally look calm, Rohit. Were you actually calm inside in those end moments? Yeah, it was, I think, a bit of both. I was calm and nervous at the same time. But it was important for us, for a group, to stay calm and, execute the plans, because it was a shortened game, and it can go either way, to be honest. With 10 wickets in hand, it can go either way. But I thought we held our nerves pretty well, when the game started after the break. So it was a good win in the end. Let me ask you about a couple of key players. Is Arshdeep Singh now your go-to bowler at the death, because you've backed him so much, and once again he delivered today? Yeah, I mean, it is something, when he came into the scene, we asked him to do this job for us. And with Bumrah not being here, obviously someone has to take that
role, which is a tough one, to be honest. And for him, such a young guy at his international career, to come and do that kind of a job, it's not easy. But we prepared him all this while. Last 8-9 months, he's been doing that for us. But obviously, there was a choice between Shami and him. But I had to back someone who's been doing it for us regularly. I asked Virat a little while ago at the presentation whether he thinks he's back to being the Virat Kohli that he was. When you're watching him, do you think he's got there? Do you think you can still see an upside to his form? I think, in my opinion, he was always there. But it was just a matter of few innings here and there, which he got in Asia Cup, and since then he's never looked back. The kind of form he's shown in this World Cup is tremendous. So we never had any kind of doubts. We always knew what he brings to us as a group, and he's clearly doing that for us. And I was quite impressed with how KL batted as well, because it was important for him and important for the team as well. We know how what sort of player he is at the top of the order, and if he bats the way he bats, it puts the team into different in a very different situation. Now, you expressed your disappointment with the fielding in the previous game. Today, you got virtually everything. Yeah, I thought our fielding was brilliant. Some of the catches we took under pressure, it was great to watch. Honestly, when you're playing in in front of such a big crowd, it's not easy. And of course, it's a high-pressure game. You want to win every game, and to take those catches under pressure shows the character of the guys as well. And I had no doubts about our fielding ability. It was just that, you can have an off day on the field, but luckily we were very good today on the field. It couldn't have been easy with cold hands. Well done today, Rohit. Thank you very much. और गीतांजलि यहाँ स्टूडियो में गर्भागर्म चल रही थी, लेकिन ये 2020 जो क्रिकेट है ना, हमारा शो भी इसी तरह से चलता है। तो कन्नन हमारे एक लिसनर थे, बहुत ही स्पेशल लिसनर और बहुत सालों से हैं। क्या कहना चाहेंगे? और मेरा सवाल यही था कि जब इस तरह का पैसा वसूल मैच होता है तो आकाशवाणी के माध्यम से वो खुश होते हैं और स्टूडियो में हम। देखिए, एक विजुअली हैंडीकैप्ड सुनने वाले के लिए रेडियो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं तो हम लोगों ने भी आंखें बंद कर ली थी। वी आर ओनली प्रेइंग एंड लिसनिंग टू आवर हार्ट्स कि इंडिया जीते। तो मैं समझ सकता हूं इनका इमोशन क्या है, बट थ्रू ऑल इंडिया रेडियो एंड थ्रू प्रसार भारती अगर ये इमोशंस कन्वे किया जाता है और वो अभी भी हमें सुन रहे होंगे, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खुशी उनके दिल में है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, खुशी हम सब के दिल में है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सब घबराए हुए थे, आंखें भी बंद कर ली थी, बट यहाँ पर तो ना हम आंखें बंद करते हैं ना ही हम अपना सोचना बंद करते हैं। इतना ज़रूर है कि आज का मैच तो अच्छा हुआ है। आने वाले मैच में जो भारत की स्ट्रैटेजी, हमने रोहित को सुना, उन्होंने कहा आई हैव नो कंप्लेंट्स एंड वी वर रियली ऑन अ गुड एंड काम, वी वर काम एंड कंपोज राइट नाउ, बट देन व्हेन रोहित हिमसेल्फ विल क्लिक, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ही हैज़ टू रेट्रोस्पेक्ट दैट ऑल्सो। Well, he has to retrospect and he also has to introspect. More important, because the thing is, Rohit himself is not scoring runs. He scored only 150 against a weak team. Right. Okay? The second thing is the form of Dinesh Karthik. You cannot get away like this where you are not scoring runs. You cannot get away like this when you are fumbling behind the wickets. And two were clear chances. I don't think Rishabh Pant would have dropped it. So he's being backed. There's a very big difference between backing someone like Arshdeep for the death over and backing a wicketkeeper who's not in form. He's not in form with the glove work. And when you're talking about, we had Venkat, not our guest, by Venkat from Telangana calling. He wants Ashwin to open the bowling. So unless you have a good wicketkeeper, Venkat was discussing that he's standing up to the wicket, but he's not crouching. He's actually up. So these are things which come glaring to the eye. You have to pay attention to it. You cannot go with a eye shut strategy ki you're going to continue. You will have to make course corrections. Today, for example, you had 6 bowlers, but the kind of rain break and the rhythm which was broken, and Duckworth Lewis, normally it hits you, but today it was in our favor. And Venkat, he is not even in fact justifying his role as a finisher. Listen, you cannot criticize these players because every time you criticize they score runs. Acha. Yeah. And I think in a way we should criticize them then. Anyway, look, this is cricket. This is instant cricket. Yeah. You are not going to be consistently scoring like Kohli is doing.
Right. So you need a bit of a start. These boys are trying. Their conditions are pretty hostile there. No team has got good start except today Bangladesh got 60 odd runs. Otherwise, no team has got 40 runs. So it is a very big test for the opening batsman because the ball is moving a lot, it is bouncing a lot, and fast bowlers are really quick. So here these conditions are testing conditions for any top batting, because the ball is new and it is moving around. So it is not going to be easy, and getting a good start, I would say, as we said, that if you play the first 4 overs and don't even lose a wicket, that itself is a good start. And today they did that. So I think that helped Rahul to play himself in, and Rahul got the runs. Next time maybe Rohit will get. Rohit got a 50. Don't forget, he scored a 50 against a weak team. Whatever it is, he got a 50. खैर आपकी चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। कन्नन, अभी जो हमारा ग्रुप है सुपर 12 में, ग्रुप 2, 2 टीमों के सामने लग चुका है, एलिमिनेटर, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स। कल पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका अपने सामने होंगे। क्या यहाँ से पाकिस्तान कुछ सांस लेकर टॉप 4 में जाने की उम्मीद कर सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, वो टूट चुका है, और साउथ अफ्रीका का फॉर्म बड़ा हॉट रहा है। बट अगर विनिंग स्ट्रीक अरेस्ट होता है साउथ अफ्रीका का, दैट विल बी अ वेरी वेरी न्यू थिंग। मेन चीज़ ये है कि इंडिया को देखना है कि वी हैव टू विन आवर रिमेनिंग मैचेस एंड होप फॉर द बेस्ट एंड मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। जो आज हमने जीत दर्ज किया है, रिवर्सिंग द ट्रेंड और बकिंग द ट्रेंड आफ्टर लूजिंग टू साउथ अफ्रीका, दैट इज़ द बेस्ट पॉजिटिव। जी, और बाकी बहुत सारे पॉजिटिव्स हम हमेशा कहते हैं, जब भी खेल होता है और इंडिया जीतती है, बहुत सारे पॉजिटिव्स हम देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यही करते हैं ये जो कॉलर हैं ये भी बहुत पॉजिटिव बात बताने वाले हैं हमें। हेलो जी, नमस्ते मैम। आप लोगों ने जो भी बात कही दिव्यांगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी दोनों आंखों से टोटली ब्लाइंड हूँ। जी जी जी। तो मैं आपको बता दूं, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश देवरिया का रहने वाला हूँ, पर मैम जो है कि देवरिया में हम सुन नहीं पाते हैं, और वर्तमान समय में हरियाणा के बहादुरगढ़ में हूँ। अच्छा जी। तो देखिए ऐसा है कि जब भी आपका कोई फीडबैक आता है, हम सब आपके अगर सुनने में किसी तरीके की, ट्रांसमीटर में किसी तरीके की दिक्कत होती है, अपनी टेक्निकल टीम को बताते हैं, इस पे वो काम करते हैं। बाकी हमारी आप स्ट्रेंथ हैं, आप आकाशवाणी को सुनते हैं, तो आपके सुनने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है और गौरव भी बढ़ता है। यहाँ पर जो कल का मुकाबला है ना, उसे लेकर कन्नन तो काफी एक्साइटेड थे ही। अच्छा। लेकिन अब सुनते कि वेंकट क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये बैटल है फास्ट बॉलर्स का। दोनों टीम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में फास्टेस्ट बॉलर्स हैं इस टूर्नामेंट के, और मैं समझता हूँ इसमें एज है साउथ अफ्रीका का, बिकॉज देयर फील्डिंग इज मच बेटर देन पाकिस्तान। एक तो ये तो है ही। द सेकेंड थिंग इज दैट दे गॉट अ वेरी डेंजरस प्लेयर इन डिकॉक। इफ ही गेट्स गोइंग, ही कैन टेक, एंड द मैच इज बीइंग प्लेड एट सिडनी, वेयर conditions are slightly different from what it is at, say, Melbourne or Perth. So that will suit the Pakistani players, but they'll have to play really well. Let's not forget, Nauthier is this fastest bowler in this tournament along with Wood of England. So, there'll be a real test of good fast bowlers against good cricketers. So I hope to see a good match between two very outstanding teams. It's difficult to pick a clear winner. It'll be a close game. The team that holds its nerve should carry the flag. Yes, we all in fact are loving good matches. We are looking forward to good players who are performing well. But right now, India won, and that's what mattered today. And we are in fact looking for much more better performances from India. For now, thank you so much, Venkat, for being in the studio. Thank you, Kannan. Thank you, Adesh. This is Gitanjali. Also, we would like to thank our technical team for supporting us and our producers, of course. And this is love to all our listeners. Just enjoy the game. Congratulations, Gitanjali. Yeah. Thank you. Congratulations. हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।